गुड इवनिंग, नमस्कार सभी का। मैं डॉक्टर वैभव पाठक, वेलकम you all on behalf of Endocrine Society of India. Each Saturday, we bring to you a new topic for discussion which is relevant to your health. And in continuation of that, we are very excited to bring you a new topic for our discussion. This week, this month, whole of August month, Endocrine Society has of India has been running a campaign to raise awareness regarding the pre-diabetes and its various other consequences, and how do we manage pre-diabetes and what our patients can do to prevent the pre-diabetes going into the pre-diabetes frank phase. So this is our last episode for the pre-diabetes awareness program, and for that we are here with our latest topic of discussion, in which this is we will be raising the awareness that is pre-diabetes. Is it time to be alert? Is it time to be very alert about the complications, and is this an opportunity to prevent the complications which might happen to our patients if they are having pre-diabetes? So let me introduce at this point of time our respected panelists. We have eminent respected panelists who will be joining us from across the other across the country. And so it's my honor and privilege to introduce Dr. Ganapathi Bantwal sir. Sir is a past president of Endocrine Society of India, and sir is presently heading the Department of Endocrinology at St. John's Medical College, Bangalore. A warm welcome to you, sir. Thank you. The second panelist who will be joining us from Gurugram is Dr. Dheeraj Kapoor, sir. Sir is the head of Department of Endocrinology at Artemis Hospital. A warm welcome to you, sir. Our third panelist, Dr. Nilakshi Dekha. Ma'am is consultant endocrinologist at Apollo Hospital and Dispur Clinic at Guwahati. A warm welcome to you, ma'am. Our fourth panelist is Dr. M.V. Rama Mohan sir. Sir is the consultant endocrinologist at Apollo Hospital, Nellore, and sir will be giving us good insights and good measures where we can give our patients, and it will be helpful to prevent the complications. So before we proceed, I would request Dr. Ganapathi Bantwal sir to just brief our respected audience about what we are going to discuss and what will be the further discussions going ahead for today's evening. Sir. Thank you, Dr. Vaibhav. Good evening, all. First of all, let me thank the Endocrine Society of India for giving me this opportunity. Today, we'll be actually talking on pre-diabetes. Now, what is this pre-diabetes? This is a form of dysglycemia or abnormal glucose, which can be viewed as a risk factor for progression to type 2 diabetes. Overt, you can become type 2 diabetes in future. And also, what's important is also for the cardiovascular disease also. Now, how do you define that? We define by a fasting blood glucose between 100 to 125 milligrams per deciliter. This we call it as an impaired fasting glucose. Or if you do a glucose challenge after giving 75 grams of glucose, and if your blood glucose value is between 140 to 199 milligrams per deciliter, we call this as impaired glucose tolerance. Or if you have an HbA1c level between 5.7 to 6.4, then also we call this as pre-diabetes. Sometimes it has been criticized, this terminology like pre-diabetes, because it attaches a stigma. So that's the reason some people tell it as intermediate hyperglycemia. That is in between. You're not completely normal, you're not completely abnormal. That's one. Or categories of increased risk for development of diabetes. You have a risk for developing type 2 diabetes. So category, you are in a high risk category. So why these other terminologies came is, it's not that you will definitely become type 2 diabetic. You have a higher chance, and for that reason, these terminologies were used. Now, what is a concern about this? Approximately 5 to 10% can get converted to overt type 2 diabetes and its association complications. This is not a small number. This is also a big number. So in India, as of now, we are around 77 million people with type 2 diabetes. And a similar number you can see, or a little bit more than that itself, are having pre-diabetes.
and they're waiting to become diabetic. So you have a big number which is waiting to become diabetic, and its consequences. So it's like it's a subclinical state. So this is a time where you can actually intervene and probably bring down the risks or progression to type 2 diabetes, or in other words, we can tell regression to normoglycemia. So what can you do? So you can do something like a dietary intervention, weight reduction, increase in physical activity. So by this, you can retard the progression to develop type 2 diabetes, retard, or you could even regress to normoglycemia. So that's the reason we always tell this is a window of opportunity that exist for regression to normal glycemia. So it's around 40 to 7% risk reduction can happen. So that's the reason if you identify this, you can take steps, no medication is required. You could regress to normal glycemia also. So this is the importance of knowing this pre-diabetes. Over to थैंक Vaibhav. थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने हमारे दर्शकों को बताया कि किन-किन कैसे आपके शुगर लेवल्स होंगे जिसपे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अगर हमारे खाली पेट का शुगर 126 126 से कम रहे, खाने के बाद का शुगर रीडिंग सर ने बताया, HbA1c की रीडिंग हमारी सर ने बताया। तो ऐसा होने पे आप प्री डायबिटीज़ क्लासिफिकेशन में आएँगे, लेकिन इस समय आपको अगर आप प्री डायबिटीज़ हैं या प्री डायबिटीज़ आपको पता लगता है, तो उसमें कोई परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है। हम आगे चलते हुए सारी चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, जिससे तमाम तरह की प्रॉब्लम्स जो आगे आ सकते हैं, उसको हम बचा सकें। और सर ने एक और बहुत ज़रूरी चीज़ हमें बताया कि जो कि डायबिटीज़ का प्रेवलेंस हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा संख्या में लगभग 75 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है। और सर ने ये भी बताया हमें कि उतनी ही संख्या या उससे कुछ ज़्यादा संख्या में प्री डायबिटीज़ भी लोग हैं, जो कि अभी अगर उनको सतर्क नहीं रहे वो, अगर वो अपनी चीज़ों को ध्यान ना दें, तो वो आगे चलते हुए डायबिटीज़ की सीढ़ी में चले जाएँगे। तो इन सभी चीज़ों को हम आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर धीरज सर। Sir, as we are talking and our theme for today's discussion is about the complications, so our audience must be thinking that what is this complication? So just I would like sir you to please brief our audience about the complication and what we are going to discuss further regarding the complications. वेल थैंक यू वैभव। सो कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है कि डायबिटीज किन किन ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। ये दो श्रेणी में होते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी बीइंग द किडनी, द नर्व, द आईज, पॉसिबली द लिवर, एंड द सेकेंड कैटेगरी स्ट्रोक और हार्ट अटैक, जिसे हम लोग एमआई बोलते हैं अपने मेडिकल पार्लेंस में। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। थोड़ा सा मैं यहाँ पर साइंटिफिक होऊंगा। एक होता है टिकिंग क्लॉक हाइपोथेसिस, है ना, फिल्म में कहते थे हाँ भाई अब तेरा टाइम खराब शुरू हो गया। सो द टिकिंग क्लॉक। सो वंस यू गेट प्री डायबिटिक, द रिस्क फॉर कार्डियक एंड स्ट्रोक इंक्रीजेस। इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं कि मोटापे में अभी अगर प्री डायबिटीज नहीं भी हुई है तब भी वो रिस्क बढ़ जाता है। तो जो इसमें रिस्क है कॉम्प्लिकेशन हार्ट और ब्रेन का, जैसे स्ट्रोक का, वो तकरीबन सिमिलर है टू डायबिटीज। द रिस्क ऑफ इफेक्ट्स ऑन नर्व्स, the eyes is much less than diabetes, but the risk of a heart issue is almost similar. तो टाइप 2 डायबिटीज में जो सबसे घातक चीज होती है वो होती है हार्ट अटैक, और प्री डायबिटीज में उसका खतरा तकरीबन सेम होता है एज कम्पेयर टू डायबिटीज। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और जो बताई डॉक्टर गणपति ने, और मैं बोलूंगा यहाँ पर, कि प्री डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज है, चाहे कोई किताब बोले चाहे ना बोले। इफ यू थिंक दैट डायबिटीज इज अ बैड डिजीज, विच इट इज, if you think that diabetes is a complication of pre-diabetes, I am sure that you will be very careful in managing your pre-diabetes. तो डायबिटीज को भी उसका एक कॉम्प्लिकेशन समझे, क्योंकि प्री डायबिटीज में 50% चांस एक इसका कॉम्प्लिकेशन समझो, और उसी में जो है भलाई है।
आपको वही परहेज करना है जो डायबिटीज में करना होता है, आपको उतना ही एक्सरसाइज करना है। लेकिन मेरी एक सलाह यहाँ पर है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और बहुत ही स्ट्रिंजेंट पे जा रहे हो, एक बार अपना कार्डियक असेसमेंट जरूर करवा लो। जरूरी नहीं है कि आप यंग हो तो आप ना कराओ। वी हैव सीन एक्सीडेंट्स हैपन ऑन अ ट्रेडमिल, वी हैव सीन एक्सीडेंट्स हैपन विद बिगेस्ट एक्सरसाइज। तो वो बहुत जरूरी है कि प्री डायबिटिक में भी कार्डियक रिस्क होता है और ये अपने को मानना पड़ेगा। सो द कॉम्प्लिकेशंस, जस्ट टू लाइंस: नंबर 1 कार्डियक, नंबर 2 स्ट्रोक, एंड नंबर 3 प्रोग्रेशन टू ओवर्ट एंड फ्रैंक डायबिटीज। यस, थैंक यू सर। सो ये दर्शकों के लिए समझना जरूरी है, हमारे ऑडियंस के लिए, कि जैसा सर ने बताया, और ये सामान्यतः हम अपने क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में मरीजों से सुनते हैं कि कहते हैं कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, शुगर की जस्ट शुरुआत हुई है। तो उस शुरुआत के समय ही हमें उस शुगर को पकड़ना है, हमें उसको मैनेज करना है, और जो जो चीजें उसकी बचाव के लिए है कि आगे वो प्री डायबिटीज फेज फ्रैंक डायबिटीज में ना जाए, उसके लिए हमें सतर्क रहना है। Moving ahead, we have discussed some parts of it. Now, my next question is to Dr. Nilakshi Dekha, ma'am. Ma'am, as Ganapathi sir as well as Dheeraj sir have briefed us, so I would just like to again ask you this question that, जैसे कि pre-diabetes, are these pre-diabetes patients are at risk of developing these severe complications? Usually, with any disease, we think in the initial phases it is mild, so there will not be any complications if it is not treated. That is there with all diseases, all chronic lifestyle diseases. Actually, it becomes difficult for patients to accept that they have developed hypertension, that they have developed impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose in the initial phase. And so they remain in a phase of denial until and unless these diseases progress to a greater extent, when the symptoms become clinically obvious. But it should be reiterated to our patients that these are chronic lifestyle diseases which need to be managed in the early stage, because we have also heard about the common soil hypothesis. So, where the ingredients which are required for diabetes, for hypertension, for dyslipidemia, for heart disease, they are the same. एक ही मिट्टी होती है, एक ही इंग्रेडिएंट्स होता है जिससे ये सारी डिजीजेस हो सकती हैं। एक फॉरेस्ट में जैसा मिट्टी का क्वालिटी होगा, वैसे एक जैसे पेड़ भी आएंगे वैसे। तो इसलिए वो दिमाग में रखना है कि अगर हम लोग को प्री डायबिटीज है अभी, तो उससे भी जिस दिन से वो पकड़ में आए, तो कब से पकड़ में आया वो एग्जैक्टली हम लोग डेट नहीं कर सकते। वी डू नॉट एग्जैक्टली नो व्हेन द डिजीज स्टार्ट्स। सो द मोमेंट इट गेट्स डायग्नोस्ड, हम लोग के पेशेंट्स को ये बताना होता है कि अभी थोड़ा शुगर ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी खतरा है। इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। और इस हेल्दी लाइफस्टाइल में हम लोग को रेगुलर मॉनिटरिंग भी करना होता है, शुगर नॉर्मल में आया नहीं आया, और अगर नहीं आया तो मेडिकेशन स्टार्ट करने हैं। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी अच्छा डाइट फॉलो, हेल्दी डाइट फॉलो करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके अगर डिजीज कंट्रोल में है, तो उसका कॉम्प्लिकेशंस आने का स्कोप थोड़ा कम है। लेकिन अगर ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है खुद के with efforts, then we should look into introducing medications to control these diseases, because ये पाया गया है कि ये डिजीज में इनिशियल स्टेज में भी जो डॉक्टर कपूर जी ने बोला कि कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत हाई रहता है। तो हम लोग के जो आर्टरीज है वो दे स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड even in the pre-diabetes state. So we tend to have higher incidence of atherosclerotic cardiovascular disease, यानी हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियां या किडनी की बीमारियां, वो सब ज़्यादा आने का चांस रहता है। और वो प्री डायबिटीज़ में ही नहीं, हाइपरटेंशन भी हम लोग कई सारे यंग लड़के देखते हैं who end up having chronic kidney disease and require renal transplant. Why? Because initially when they had hypertension they were in a mode of denial, acceptance नहीं था कि प्रेशर है, वो दवाई खाना है। वैसे ही प्री डायबिटीज का भी ऐसा है, थोड़ा एक्सेप्टेंस कम होता है। वी टेंड टू डिनाई, वो एक ऑस्ट्रियाकल अप्रोच एक होता है जहां हम लोग लाइक एन ऑस्ट्रिच वी टेंड टू हाइड आवर हेड्स इनसाइड द सॉइल, इग्नोरिंग द फैक्ट दैट वी हैव प्री डायबिटीज. But it is very important to be proactive and take care of the blood glucose levels even in the pre-diabetes state, because in the long run they can lead to complications. The complications का जो स्पीड होता है, वो गाड़ी का स्पीड वो एक्सेलरेट हो जाता है।
if we don't have control over these. So even pre-diabetes is important. We usually tend to ignore, but that should actually be viewed as a window of opportunity. कि जहाँ पे Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for that wonderful insight. So this is important for our patients to understand, and everybody who is listening to us, that pre-diabetes state, or the moment somebody tells to you, or your doctor, your physician tells to you that you have pre-diabetes, then the moment, that is the moment when you have to be alert, you have to be cautious with your lifestyle, with your other, which will help a long way in preventing the further complications. hotspot to So dekhai nahi. now our audience must be thinking that what are these Right? complications, and now the most important question is to the Dr. MD Rama Mohan sir. Sir, if, as we have discussed, that these pre-diabetes patients, they are at risk of developing complications, so I would like you to, sir, just brief our audience about that. What are these complications, and what organs they do get affected from these complications? Yeah. Good evening, everybody. Thank you, ESI, and thank you, our senior guests here. Uh, it's indeed very nice program about pre-diabetes we are arranging today. The main motto of our program is the prevention of diabetes complications. We know that it is like a spectrum of disease where the pre-diabetes starts and it progresses to diabetes, and the person gets complications if they are not treated. Their HbA1c is not under control. So हमारा मेन टारगेट होता है उसको, यदि एक एक आदमी को 90 ईयर्स में ये कॉम्प्लिकेशन आना चाहिए ऐसा बोल के होता है। यदि आपका डायबिटीज या प्री डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, वो आपको 50 साल में या 60 ईयर्स में आगे आ सकता है। दैट मीन्स दैट योर मॉर्बिडिटी इज इंक्रीजिंग for the future, and your hospitalization and your risk of expenses for medical expenses are increasing at the end stage of your life. So what I would like to say to all the pre-diabetic patients is that the care you take now, the results you can't see the results at present, but they are like saving money in your bank so that you can use in the future. So like that, if you start acting now when your pre-diabetes, means you have a window period, you have a time to know about yourselves that you have a family history of diabetes, your sugars are not under control. It should be fasting should be less than 100, it is not there. Your postprandial should be less than 200, less than 160, it is above. That means that you are now pre-diabetes and you may go into future diabetes. So I would like to explain to them that you have a higher chance of getting microvascular and macrovascular complications, the diseases about your eyes, kidneys. We know that at the time of diagnosis, most of our patients, about 40 to 45% of type 2 diabetic patients, have any one of the complication at the time of diagnosis. That means that during the pre-diabetic phase only, the patients may have microvascular complications like nephropathy. They can have problems with the eyesight. They can have problems with neuropathy, like knee tingling and numbness, or any positive or negative symptoms they can have. So that I want to explain them that the most क्या होता है ना, वो लोग they are not in an acceptable mood, and they say that I don't have symptoms, my report is wrong, I want to consult other doctor, I want to repeat the test. Like that, they'll be roaming around and wasting that time because they are in a denial mode. So what I try to explain to them that this is the chance for you. If you lose weight, if you make your sugars back to normal, if you want to revert your prediabetes to normoglycemia, that means that your chances of getting complications in the future will be reduced. This is the best way we can explain to all our patients. And the common complications are like mainly about the dreadful complications are like neuropathy, nephropathy, and retinopathy. These are called the microvascular complications, and the complication related to large vessels like cardiac stroke and also brain stroke and peripheral vascular diseases are at high risk. थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो मैं अपने ऑडियंस को ये चीज़ बताना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा, जो चीज़ हमें सर ने बताया कि हमारे जो भी अंग है, जो कि डायबिटीज़, फ्रैंक डायबिटीज़ जब मरीज़ को होता है, तो अगर मरीज़ कोई प्री डायबिटीज़ है तो वो सारे अंग हमारे इफेक्टेड हो सकते हैं। जैसा सर ने हमें बताया कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है, हमें स्ट्रोक की समस्या हो सकती है,
जिसको हम सामान्य लैंग्वेज में लकवा भी कहते हैं, वो हो सकता है। हमारे पैर की धमनियां जो होती हैं, जो आर्टरीज होती है, उसमें ब्लॉकेज हो सकता है, जिसको हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कहते हैं। ये सारी चीजें हो सकती है। और इसके साथ साथ सर ने हमें बताया कि कुछ माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जिनका भी रिस्क रहता है मरीजों को, जैसे कि हमारे आंखों पर जो आंखों का पर्दा होता है, जिसको रेटिना कहते हैं, उस पे असर पड़ सकता है, नर्व्स पे पड़ सकता है, जिससे मरीज के पैर में दर्द होना, जलन होना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। और इसके साथ साथ हमारी किडनी पर भी उसका असर पड़ सकता है, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी के तौर पर जानते हैं। तो इन सारे अंगों के अलावा और भी विभिन्न अंग हैं जिन पे कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है, अगर हम डायबिटीज को और प्री डायबिटीज के स्टेज में अपने को सतर्क ना करें और उसको जल्द से जल्द बढ़ने से रोके नहीं। इसी के साथ नाउ my next question is to Dr. Ganapathi Bantwal sir. And now, sir, our audience must be thinking that we are talking about complications. We have enumerated the various types of complications. So they must be thinking that what is the prevalence of complications, and in what percentage of patients these complications are seen in our population, sir? Okay. Suppose you are completely normal. The prevalence of this complication is around 1.5%. Now, suppose you have prediabetes, the risk is around 11.4%. So you can see it's quite significant. उसी तरह आई इन्वॉल्वमेंट, रेटिनोपैथी जिसको कहते हैं, वेरियस स्टडीज में 8 to 20%, गुर्दे का असर, माइक्रो प्रोटीन लीकेज, ये सब 15 to 17% में हुआ है। उसी तरह नर्व के ऊपर असर अराउंड 13 to 14% लोगों को है। उसी तरह हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, एक स्टडी में इम्पैक्ट ग्लूकोज टॉलरेंस, जब शुगर 140 to 199 है, वो 15 से 25% लोगों में था। उसी तरह पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज डॉक्टर वाइबन ने बताया था, वो अराउंड 5 to 9.5% लोगों में है। हमारे देश में कुछ स्टडीज हुआ है, एक तो दिल्ली में से किया था, उसमें 10% लोगों को ये कॉम्प्लिकेशंस था। उसमें से 4% लोगों को माइक्रोवैस्कुलर, जो आई, किडनी या न्यूरोपैथी, 7% लोगों को मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस था, जैसे हार्ट का या स्ट्रोक का था। उसी तरह एक चेन्नई में भी एक कप स्टडी करके था, वहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा ही था, अराउंड 14%, शायद क्योंकि वो लोग थोड़ा बुजुर्ग थे, देवर अ हायर एज पॉपुलेशन, प्रोबेबली दैट वाज द रीज़न। सो नॉट ओनली दिस, एक और स्टडी था जो विदेश में किया था, नोन एज डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोजेक्ट, वहाँ पे 8% लोगों को ये कॉम्प्लिकेशंस था। उसी तरह और एक स्टडी था पाइमा इंडियंस में, वहाँ पे 12% लोगों को था। सो ये सब कॉम्प्लिकेशंस बताए। ऑल कॉज मोर्टालिटी जो बोलते हैं, वो इट वेरिड बिटवीन द वेरियस स्टडी, 13 से 32% तक था। अभी ये कॉम्प्लिकेशंस है, हम क्या उसको डाइट एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम कम कर सकते हैं। एक डार्किंग स्टडी करके था, वहाँ पे दे हैव फाउंड दैट रिडक्शन इन द कॉम्प्लिकेशंस डिड हैपन सिग्निफिकेंटली by around 36% for coronary artery disease and 47% for retinopathy. So it's not that we are telling you have it. You can also prevent it by good dietary and lifestyle changes, modulation. So there was another study, DPP. There what happened, there was a risk reduction for in blood pressure, our LDL, which is a bad cholesterol, triglycerides came down, but the microvascular complication did not change that much. Or for that matter, coronary artery calcium score did not change. So you do gets benefit. At least the risk factors can come down. So that's the other important thing. Not only to tell you that, okay, it's there. We're not trying to scare you. We could even prevent by doing these things. Sir, thank you, sir. So this is ये हमारे दर्शकों को समझना ये जरूरी है, जैसा कि सर ने हमें तरह की डेटा बताए और तमाम जो शोध हुए हैं हमारे देश में भी और बाहर की भी, विदेशों में भी, जो वेस्टर्न कंट्रीज में शोध हुए, तो एक औसतन अगर देखा जाए तो औसतन 10 से 25% लगा लिया जाए, तमाम तरह की जो विभिन्न कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लगभग 10 से 25% है। तो इसका मतलब ये कि अगर 100 लोग प्री डायबिटीज से प्रभावित हैं तो उसमें से 10 से 25 लोगों को ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो ये जैसा कि सर ने हमें शुरू में भी बताया था कि प्री डायबिटीज की संख्या एक हमारे देश में बहुत ज्यादा है, और इनफैक्ट
जितने डायबिटीज के मरीज हैं उससे ज्यादा लोग तैयार है प्री डायबिटीज के फेज में कि वो डायबिटीज में जाने के लिए, अगर उनको अभी रोका नहीं गया तो अगर उसमें देखा जाए तो, और उसमें अगर 10 से 25% लोग कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाते हैं तो ये कि बहुत ही बड़ा नंबर होगा जो कि हमारी हेल्थ सिस्टम के लिए एक चैलेंज हो सकता है. So now moving ahead, as we have discussed about these complications as well as the prevalence of these complications. So now my next question is to Dr. Dheeraj sir. Sir, our audience must be thinking, who are pre-diabetes, or for that matter who are listening to us, who are frank type 2 diabetes patients, they must be thinking that are these complications of pre-diabetes, they are similar to what happens in frank diabetes, or it is slightly different, sir? देखो, लॉजिक के हिसाब से इसको प्री डायबिटीज इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो एक नॉन डायबिटिक पर्सन से ज्यादा होते हैं और फ्रैंकली डायबिटिक पर्सन से कम होते हैं. असल में देखा जाए तो प्री डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, लेकिन इसकी अहमियत है कि हम इससे वापस जा सकते हैं नॉन डायबिटिक रेंज में. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि those of us who are diagnosed as pre-diabetes should consider themselves very, very lucky because they still have a window of opportunity to go back to non-diabetes and therefore either abort the complications totally or reduce the risk significantly. और जो प्री डायबिटीज बढ़ी है हमारे देश में वो इसलिए बढ़ी है बिकॉज टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं. देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे तो था कि डायबिटीज में ज्यादा यूरिन आना, वेट लॉस होना और भूख लगना, प्यास लगना, ये जो है 4 चीजें थी. 60% लोगों में ये चीजें नहीं मिलती हैं. वो क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज ज्यादातर डायबिटीज डायग्नोज हो रही है रूटीन लैब टेस्ट के आधार पर, जो कॉर्पोरेट चेक्स होते हैं. तो आप इतनी सी बात समझो कि अगर डायबिटीज के 60% लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होते तो प्री डायबिटीज सिम्टम्स होंगे ही नहीं. लेकिन मैं थोड़ा मजाकिया तौर पे कि लैब रिपोर्ट्स कभी कभार, लेकिन हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता. तो आप अपने आप को प्री डायबिटीज के लिए स्क्रीन कब कराएं? अगर आपका पेट बहुत बाहर निकल रहा हो, गर्दन आपकी काली हो रही हो, मस्से निकल रहे हो, आप अपने आप को स्क्रीन कराइए. कुछ भी हो, शरीर झूठ नहीं बोलेगा. और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसा मैंने कहा कि हार्ट इश्यूज, स्ट्रोक इश्यूज एंड ऑफ कोर्स द पेरिफेरी ऑफ द वेसल्स, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ डायबिटिक. ऑलमोस्ट. सी, मेडिसिन में कोई चीज 0% नहीं होती, कोई चीज 100% नहीं होती. सो दे आर स्लाइटली if at all lower than the diabetic population. एक और बात, अगर किसी व्यक्ति को पैरों में डिजीज है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, उसे अपने आप को हार्ट डिजीज के लिए अवश्य स्क्रीन कराना चाहिए. डिक्टम है, इफ यू हैव अ पीएडी, स्क्रीन योरसेल्फ फॉर सीबीडी. ये करना ही करना है. अब जैसा बताया डॉक्टर गणपति ने कि अगर आप जो है परहेज करेंगे, वॉक करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं मेटफॉर्मिन नाम की दवा खाओ, हम उस सब में नहीं जा रहे. प्री डायबिटिक में 2 दवाइयां जिंदगी भर चलने वाली हैं और वो दवा है परहेज और व्यायाम. Any Tom, Dick and Harry can write a pill, anyone can pop a pill, but that is not the end of the story. Without lifestyle changes, nothing is going to work. On the contrary, if you have a pill that sets in complacence, अरे भाई मैं तो दवा खा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा. नहीं, सब कुछ होगा अगर परहेज नहीं करेंगे. So 2 medicines lifelong. और अगर आपका HbA1c नॉर्मल आता है, और भगवान करे आए, तो वो इसलिए आता है कि आपने परहेज और व्यायाम ईमानदारी से किया है. 5.6 आ गया, आप बदपरहेजी चालू करिए, आप वॉक करिए, आप 7 पे पहुंचेंगे. सो प्री डायबिटीज
को बोलते हैं इंटरमिटेंट हाइपरग्लाइसीमिया या एट रिस्क फॉर डायबिटीज। और एट रिस्क इसलिए बोला गया है कि प्री डायबिटीज से एक हताशा आती है, अब तो होनी है, वो केस नहीं है। इसे बोला गया एट रिस्क फॉर डायबिटीज बिकॉज आप खतरे पे हो। सो ये बातें समझनी है। कॉम्प्लिकेशंस मोटे तौर पे कार्डियक और स्ट्रोक, तकरीबन सिमिलर डायबिटिक के, लेकिन न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी आंख के पर्दे पे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन नॉन डायबिटिक में काफी हद तक रिग्रेशन या वापसी हो सकती है। Thank you, sir. So this is important for our audience to understand that the complications which do happen in frank diabetes, it does, as we have discussed, it does happen in pre-diabetes as well, and they are similar as well in terms of the large vessel diseases as well as in terms of small vessel diseases. It happens at similar diseases happen, but again the prevalence might differ. Now, as our audience must be thinking, and they are like that, we have all discussed about what are the types of complications and what does it can happen to our patients if they are not careful about their diet, exercise. And so now the going ahead to the most important aspect of our discussion of today's is that, as our theme for today's discussion is this an opportunity? So I would like to put my next question to Dr. Nilakshi ma'am. Ma'am, is this pre-diabetes phase really a phase which can be used as an opportunity for by our patients, ma'am? Yes, of course, Dr. Weber. As the name says, pre-diabetes. So we can take the pre from prevent and keep diabetes as such. So pre-diabetes is equal to prevent diabetes. So this should actually be viewed as as a window of opportunity to keep ourselves healthy in the later stage of life. As Dr. Dheeraj has said, that it is very important to follow two main mantras in the prevention, that is restrain as regards a healthy diet. We have to maintain a healthy weight, so at least losing 5 to 7% of one's weight. Say if one is overweight, say one is 75 kg or 70 kg, even if he loses 3 to 5 kgs of weight, that number may seem to be insignificant of losing just 3 kg, lekin metabolically it has many good repercussions. So even losing 3 kgs of weight loss can be metabolically meaningful in addressing the complications. So maintaining a healthy diet, something which we all need to follow actually, but we only preach that to diabetic patients. No, that is not true. A healthy diet is something which people, irrespective of whether they have pre-diabetes, whether they have diabetes or they are non-diabetic, they should be following that kind of a healthy diet and a healthy routine of doing basically 150 minutes of exercise per week. So this is important: maintaining restraint, keeping a good lifestyle, keeping your weight under control. I think this would go a long way in preventing the complications or preventing diabetes from developing in an individual. So, if you want to remain medicine free, I think it becomes very important for you to follow a healthy lifestyle. Thank you ma'am. So जी मैम, थैंक यू मैम. सो जैसा कि मैम ने हमें बताया और हमारे ऑडियंस को बताया कि एक आज, और मैम ने एक नया टर्म भी दिया हमें कि प्री डायबिटीज को डायबिटीज का पहला फेज ना कह के हम ऐसे कह सकते हैं कि प्री डायबिटीज को हम प्रिवेंट डायबिटीज कहें. तो जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि प्री डायबिटीज का स्टेज कभी भी जब आपको पता लगे, कोई आपको बताता है, तो उस समय ही तैयार हो जाइए कि ये प्री डायबिटीज नहीं है, बट हमें आगे आने वाले फ्रैंक डायबिटीज को इस समय प्रिवेंट करना है. So, as ma'am has already discussed about that, yes, this is a very good opportunity, and it's a window of opportunity which can be used by our patients to prevent not only the frank diabetes, but as well as the various other diseases like heart diseases, stroke, as well as the other small vessel diseases. So now our audience must be thinking that, like, yes, they are saying that. Can I add something here? Vaibhav, can I add something here? Please, ma'am, please. तो हम लोग जो बोलते हैं कि ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, वो ऐसे साइंटिफिक तौर पे भी ऐसे देखा गया है. जो भी ट्रायल्स हुए हैं पास्ट में, उसमें कई हजारों लोगों को ट्रायल्स में ऐसे लेके ऐसे देखा गया है कि मेडिसिन दे के डायबिटीज प्रिवेंट कर सकते हैं, या रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट दे के प्रिवेंट कर सकते हैं. तो ऐसा देखा गया है कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल का जो नियम है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट, उससे 60% चांस है कि डायबिटीज नहीं होगा. लेकिन
एक दूसरा ग्रुप था जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं था, लेकिन सिर्फ कुछ दवाइयां दी गई थी प्री डायबिटीज से डायबिटीज तक ना जाने के लिए, जैसे मेटफॉर्मिन। तो उसमें देखा गया कि 30% लोगों को ही प्रिवेंशन हुआ, यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 2 टाइम्स ज्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग डायबिटीज कंपेयर टू यूजिंग डायबिटीज मेडिकेशंस इन द प्री डायबिटीज स्टेट। सो ये हम लोग कुछ ऐसा नया खुद से बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है बड़ा ट्रायल्स में कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हैज मोर इफेक्ट इन प्रिवेंटिंग डायबिटीज फ्रॉम प्री डायबिटीज स्टेट rather than taking medicines to prevent the diabetes। वो नंबर्स कम हो सकते हैं मेटफॉर्मिन से, लेकिन उसमें तो आप फिर भी मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज प्रिवेंशन का। लेकिन विदाउट मेडिसिन, इवन विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दुगना चांस है डायबिटीज ना होने के। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सो ये मरीजों के लिए समझना जरूरी है कि एक्सरसाइज के साथ ज़्यादा बेनिफिट है अदर देन कोई हम दवा लें, उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम एक्सरसाइज करें। सो नाउ एज मैम हैज ऑलरेडी अबाउट दैट, यस दिस इज a window of opportunity which can be used to prevent various complications like heart diseases like stroke as well as the other small diseases. So now my next question is to Dr. M.V. Rama Mohan sir. Sir, as we are discussing that this is an opportunity, so what patients can do and what measures they can take to use this opportunity for their benefit, sir? या सो क्या होता है ना, मुझे पेशेंट आके पूछता है कि व्हाई डिड आई गेट दिस रिपोर्ट, सो व्हाट फॉल्ट आई हैव डन, सो मैंने क्या गलती किया कि मेरा डायबिटीज के नीचे आ रहा है, प्री डायबिटीज क्यों आया करके पूछेगा फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट सी these days what is happening is there is everywhere there is a availability of more and more calories, food ज्यादा मिल रहा है, सभी लोग ज्यादा खा रहे हैं। So what is necessary we are not doing, and we are eating more and more calories, more and more junk food, more and more street food. So क्या हो रहा है ना, हम लोग previously 20 to 30 years back we used to see diabetes या pre-diabetes वो एज अबव 50 ईयर्स से ज्यादा, 60 ईयर्स ज्यादा लोगों को देख रहे थे। अभी लास्ट 10 साल में या 5 साल में 20+ लोगों को ओबेसिटी ज्यादा हो रहा है, दे आर ओवरवेट हो रहे हैं। और बच्चे लोगों को 15 ईयर से भी बहुत बच्चे लोगों को ओबेसिटी ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये लोगों को प्री डायबिटीज और डायबिटीज का आ रहा है। सो इफ एनी किड और एनी यंग अडल्ट हैविंग ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, इफ ही इज ओबीस, and then he may have a chance of getting into pre-diabetes and diabetes. हम लोग क्या बोलते हैं ना, see you don't think that food is like a fashion. For example, मैं रहता हूँ एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, where it is नेल्लोर। इधर क्या होता है ना, लोगों को खाने के प्लेसेस नहीं होते जाने के लिए, they think that food is the fashion. Every weekend they go to a restaurant to spend time with a family, not to a park or a beach. So क्या होता है इधर, they are having more and more outside food, more and more high calorie food, so that and availability of all the other apps, food apps is also increasing day by day. ये क्या हो रहा है ना, ज्यादा हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं, ओबीस बन रहे हैं। ये सभी प्रिवेंट करना जरूरी है, so that our young generation are not going to become pre-diabetes in future. So it is the responsibility of the parents and also adults to see that their kids won't spend time in restaurants or spend time in eating more and more high calorie food, so that the vegetables and fruit contents in their homes can be increased more. It can be practiced only by when the parents follow these rules, their kids also follow these rules. This is one point I would like to stress upon the public, that don't dump calories in calories dump नहीं करने का, ज्यादा नहीं खाने का, भूखा ही तो खाना है। So ऐसा बच्चों को क्या होता है ना, they give free money to go outside and have some street food like that. So childhood obesity, adult obesity are increasing. These two are the prime factors for developing pre-diabetes. एंड हमें इसको प्रिवेंट करने से फ्यूचर डायबिटीज का, प्री डायबिटीज का और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क को हम जरूर खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, एक्सरसाइज के बारे में बोले तो हम लोग बच्चे लोग बोलते हैं, सर माय किड गोज टू स्कूल एट 7 AM, कम्स बैक एट 8 PM, आई डोंट हैव टाइम
for my kid don't have a time to do exercise. This is like we are in a vicious cycle where सभी लोग this corporate world में corporate schools में बंद हुए हैं, where they don't have time. See, when say to my patient mother, so you should take your kid to walking. She says he comes to home at 8 p.m. and he takes some homework, goes to sleep. He doesn't have a time to do. So I don't really have how I don't also know how to convince these the parents also. So this is like a where इंटिश ऐसे ऐसे सभी लोग फंसे रहे हैं ऐसा कॉर्पोरेट में. सी सभी लोगों को बहुत क्या बोलते हैं, they have their own answers to every question what we say, so that ourselves and our patients should come in a middle way so that they can find some time. So they should listen to us and follow these minute changes in their lifestyle so that they can find some time to spend with their kids, to take them to do some exercise और ऐसा काम करने से ये सभी कॉम्प्लिकेशंस को हम कम कर सकते हैं. थैंक यू सर. सो दर्शकों को ये समझना जरूरी है, जैसा कि हम शुरू में भी बताए हैं और सभी हमारे पैनलिस्ट ने इस चीज पे हर अपने जवाब में इस बात पे जोर दिया है कि हमारे लिए सबसे जरूरी है अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल को सुधारना. और डाइट एंड लाइफस्टाइल के बारे में हमारे जो, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि प्री डायबिटीज मंथ में डाइट एंड लाइफस्टाइल पे डेडिकेटेड एपिसोड्स हुए हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने क्लियरली इस चीज को बताया है कि हमारे देश के लोगों को कितना खाना चाहिए, क्या चीजें महत्व है, जो महत्वपूर्ण है, जो खानी चाहिए, जिससे हम प्री डायबिटीज को रोक सकते हैं डायबिटीज में जाने से. और साथ साथ किस तरह के एक्सरसाइज करने हैं, जो कि एक्सपर्ट डाइटिशियन एज वेल एज एक्सपर्ट fitness experts have taken the previous episodes. I request our audience, they can go back and watch the previous episode specifically, which has addressed the diet and exercise part. So moving ahead, now the last question of this session, and this is very important question, as our audience must be thinking and they must have heard us talking about that. Yes, pre-diabetes is a very significant number which has increased in our country. It is in fact even more than type 2 diabetes patients, as well as they have also listened to us that it is increasing, as well as there is increased rate of complications in these patients as well. So now I would put the question to Dr. Ganapathi Bantwal sir. Sir, as we have discussed that yes, complication rate is increasing as well in these patients. So do we expect in future that yes, we know that for diabetes to diagnose, fasting should be more than equal to 126, or that intolerance should be more than 200, or HbA1c more than 6.5. So do we expect, sir, that as we are seeing that complications are increasing, do we expect in future that yes, diabetes criteria would change for us? Yeah, that's a good question based on the complication rates we are seeing. So if you just go back into the history, how did this number 200 come? So that number came because at 200 post glucose load or post prandial 200, the risks of eye disease increased phenomenally. So that's why that number came. The counterpart of that for fasting was at the time, I'm talking 1997 and all, it was 140. So they changed from 140 to 126 milligrams per deciliter. That's because if you only take fasting blood glucose of 140, we are missing at least 75% of the time, because they would have already had a postprandial more than 200. And that's how they brought it down from 140 to 126. Now, with this also, we are still missing around 25% if we just take fasting as a cutoff. So probably that numbers could be around 121. And this number could change if we get more data. So if we get a lot of other data, then it could change, say, and the fasting is not 126, probably 121 or 120, if you have that. Otherwise, I don't see that this is going to make a big difference. This is mainly for the microvascular complications. In fact, by not changing, is it too late? Are we trying to do these things too late? At least few studies have shown, including RCTs and 2-3 observational studies, at least for microvascular complications, it's still not late. For macrovascular complications, it's actually control of risk factors. Suppose you have hypertension, treat it. You have a cholesterol target,
which is high, say LDL cholesterol is high. You treat that. I think identification of this and treating it is going to retard the progression of these macrovascular complications also. So if at all the change which may happen, it could be fasting coming down to 121. Otherwise, I don't see any changes. Treatment of individual risk factors will help for macro, and as has already been highlighted in the previous episodes and now, diet, lifestyle changes, you do it, it is going to help you to regress towards normal glucose tolerance. थैंक यू सर। सो दर्शकों को ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसा सर ने हमें बताया कि जो हमारी डायबिटीज डायग्नोसिस की नंबर्स हैं, जितने पे हम किसी को डायबिटीज कहते हैं, वो अभी भविष्य में नहीं बदलेगा, लेकिन वो नहीं बदलेगा, लेकिन हमें बदलना अपने को। और हम अगर किसी भी व्यक्ति को प्री डायबिटीज है तो हमें अभी सतर्क रहना है और हमें इंतजार नहीं करना है कि हमारा प्री डायबिटीज डायबिटीज में जाए। और एक महत्वपूर्ण बात और एक बहुत ही अच्छी बात सर ने हमें बताई कि जो भी हमारे लार्ज वेसल डिजीजेज हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम, पैरों की नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, उसका सिर्फ एक प्री डायबिटीज ही रीजन नहीं है, प्री डायबिटीज ही उसका कारण नहीं है। उसके और बहुत सारे कारण है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हमारी मोटापा पर से, ये सारी चीजें जो भी हैं, हमारी धूम्रपान करना जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, तो ये सारी चीजें मिलकर एक कंट्रीब्यूट करती हैं जो हमारे लार्ज वेसल डिजीजेस को। तो हमें सिर्फ प्री डायबिटीज पे फोकस नहीं रखना है, बट हमें ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच रखना है और हमारे जितने रिस्क फैक्टर्स हैं हमें उन सभी को कंट्रोल करते हुए अपने को स्वस्थ बनाना है। और उसमें जैसा कि हम सभी ने कहा और पहले भी डिस्कस हुआ है कि उन सभी चीजों में दो महत्वपूर्ण चीजें, और जैसा कि मैम नीलाक्षी मैम ने भी हमें एक उदाहरण के तौर पर एक स्टडी के बारे में बताया कि जो भी स्टडीज हुई हैं उन्होंने यही दिखाया है, यही बताया है कि किसी भी दवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमें अपने को खुद बदलना, अपने डाइट को बदलना, अपने लाइफस्टाइल को बदलना और नियमित तौर पर एक्सरसाइज करना। So with this, we are now coming to our end of our session, and I would request each one of my respected panelists to give our audience a few lines of take-home message. So I would request with Dr. Dheeraj Kapoor sir, please sir, a take-home message for our respected audience. On a very light note, it is high time that we start copying our elders. What we are doing is we are copying our children. We are supposed to eat dal, roti, sabzi, maybe non-veg and seasonal vegetables. That's what our elders did. Instead, we are eating junk food, burgers, pizzas, what our kids do. We are supposed to exercise and work hard, what our elders did. Mind you, they never hit the gym, but they always walked. We want fancy things. Here we are copying again our children who hit the gym, and the rest of the time they are with your video games and all that. Sedentary basically. तो अगर कॉपी करना है बड़ों को करो, ठीक रहोगे। बच्चों से बचपना करोगे तो परेशान हो जाओगे। Thank you sir. So Lakshmi ma'am, please take home message for our audience ma'am. प्री डायबिटीज एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम लोग एक्टिवली अगर कोशिश करें तो डायबिटीज प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज प्रिवेंशन ही एम नहीं है प्री डायबिटीज होने का, क्योंकि प्री डायबिटीज स्टेट में रहने से भी कई सारे कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक होना, ये सारे रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे सर ने बोला कि हम लोगों को घर का खाना खाना चाहिए या हेल्दी खाना खाना चाहिए। अभी ये भी नोटिस में हम लोग ये देखते हैं कि कैलोरीज हैव बिकम वेरी चीप। दैट मींस से अ kg of apple will cost you almost 10 times the price that a packet of chips will cost. So हम लोग का नॉर्मल ट्रेंड रहता है बच्चों को बाहर लेके जाने से चिप्स एक पैकेट दे दिया, एक पैकेट चॉकलेट दे दिया, सो उससे कॉस्ट भी कम हो जाता है, बच्चा भी खुश रहता है। लेकिन हम लोग को ये जो आदत है प्री डायबिटीज होने का, और जो हम लोग बच्चों को छोटे से ही ऐसे स्पॉइल करते हैं, उनको चिप्स या चॉकलेट का जो आदत डाल देते हैं, वो लोग उसी को फैंसी समझते हैं कि वैसा ही खाना चाहिए। बाहर घूमने जाएंगे तो ऐसा खाना चाहिए, स्कूल से आएंगे तो मैगी बना के देनी है। तो हम लोग सब जंक फूड को, इट इज चीप नो डाउट, बट इट ऑल्सो कम्स विद अ कॉस्ट। वो जो प्री डायबिटीज का बीज है वो बचपन से ही हम लोग बो रहे हैं अपने बच्चों में।
So there has to be a generational shift. और इससे थोड़ा अवेयरनेस भी आना चाहिए कि जो सस्ता है या फिर जो फैंसी है उससे ज्यादा चांसेस बीमारी होने का है, और एक बार आप बीमार हो गए तो उसके बाद बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, इसलिए थोड़ा कम प्रॉब्लम होने से ही हम लोग को रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि हम लोग इन द लॉन्ग रन सब चीजों का उपभोग कर सकें, यानी सब चीजें खा भी सकेंगे, सब टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एवरीथिंग इन मॉडरेशन। वो मॉडरेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मैम, थैंक यू मैम। सो डॉक्टर एम वी रमा मोहन सर, आप few lines of take home message for our audience. Yeah, I agree with Nilakshi madam what she said. See, मैं मेरा प्री डायबिटीज पेशेंट्स को बोलता हूँ कि if you want to prevent diabetes, आप 5 किलो कम करो, 5 साल तक डायबिटीज नहीं आएगा। 3 किलो कम करो, 3 साल तक नहीं आएगा। 10 किलो कम करो, 10 साल तक डायबिटीज नहीं आएगा, ऐसा बोलता हूँ मैं। So I may be not scientifically true in years what it prevents, but the thing is that you should be able to spend time with them, and you should tell them this is what is the opportunity. See, the ball is in your court, that so that you have to monitor your sugars regularly, and you have to see how you are progressing, so that if you are serious now, so that you can prevent and you can वो लोग बोलते हैं सर मेरा टैबलेट कब देना शुरू करेगा, so I don't want any tablets now. So how to prevent this? So, and some people ask me also, sir, is there any tablet to prevent diabetes early? से कुछ दवा देते हैं करके ऐसा. So that there are different types of people which you meet every day, but the main concern is about prevention of diabetes and prevention of complications for their future, so that their old age and their the dependent age will be complication free. So that the main aim of preventing diabetes and prediabetes is the healthier old age for our patients. Thank you. Thank you, sir. Dr. Ganapathi Bantwal sir, few take-home message for our audience, sir. Yeah, so as has been previously highlighted, suppose you are overweight or obese, suppose you have hypertension, you did a lipid profile, you found that your HDL level were low, or your triglycerides were high, or if you have that black marks in the neck, that you screen yourself for blood glucose levels. And if you find you are in the pre-diabetic range, don't panic. Start exercise, start eating less, avoid refined carbohydrates, don't drink juices. I always tell my patients, don't drink juices, milkshake, pastries, ice creams. These are all energy dense food. What shall I eat? Whatever you are eating, cut down by 25%. You know you are eating less, so you do that. Increase your physical activity. Let it be a graded exercise, aerobic exercise, graded. So you're not done exercise and do 1 hour, then for 1 week you may not do anything. So let it be 10, 15 minutes, make it 20 minutes, make it 30 minutes, 45 minutes, 1 hour. So you do that. With this, you are actually regressing to normal. And you must also follow our ancestors, what they were doing. Not even ancestors, even my parents used to do religious fasting weekly once. We are wondering why are they doing, why are they troubling us? But then it's all important. You give some rest to your stomach. You have been eating, eating, eating. The only time when we don't eat is in the night when we are sleeping. Otherwise, we end up eating, eating, eating. So this fasting was very important. You're giving rest to your stomach, intestines. At least once a week or twice a week you fast. It'll go a long way in preventing these type. So for all these things, there were reasons. It's not only that, okay, we are helping trying to get some favors from the God. No, this helped even for us also. In uh, you can say it's a boon in disguise, you can say. So that's what actually we are doing. I think you should follow these type of activities. It'll go a long way in preventing pre-diabetes to develop over diabetes, or for that matter, regression to normalcy. थैंक यू सर। सो इन्हीं बातों के साथ अब ये हम अपना फेसबुक लाइव शो बंद करना चाहेंगे, और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि एज वी हैव डिस्कस कि जैसे कि ये हमारा एक अपॉर्चुनिटी है और एक मौका है जिसमें हम अपने को खुद को बदल सकते हैं और खुद को डायबिटीज होने से ही नहीं बल्कि और तमाम तरह की बीमारियों से हम अपने को बचा सकते हैं। और इसके तौर पर एक मैं एनालॉजी के तौर पे कहूंगा कि जैसे कि क्रिकेट में हम सभी देखते हैं कि जब एक कैच ड्रॉप होता है तो बैट्समैन को जीवन दान मिलता है, तो
उस तरह की अपॉर्चुनिटी है हमारी प्री डायबिटीज फेज। और जो बैट्समैन अच्छा होता है उस जीवन दान का मौका बुनाते हुए आगे सेंचुरी बनाता है। तो हमें इस जो प्री डायबिटीज अगर हमें कभी पता लगता है तो हमें उसमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। हमें इसको समझना है कि एक हमारे लिए मौका है जब हम अपने को सतर्क हो जाएं, अपने को अलर्ट हो जाएं और अपनी सारी चीजों को, अपनी लाइफस्टाइल, डाइट एंड न्यूट्रिशन को कंप्लीटली चेंज करें। इन्हीं बातों के साथ we would like to end our show, and I thank sincere regard to my respected panelists for joining and for giving us the valuable time. Thank you, sir. Thank you everybody who have logged in. सभी का धन्यवाद। नमस्कार।